हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाइवा या ऑस्पी से रिलेटेड ये सेकंड पार्ट है। ऑस्पी यानी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, चैप्टर डाइवर्सिटी इन CHN रोल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? आंसर, डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंड दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक एंड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आंसर, यानी डाइवर्सिटी का मतलब है ये अंडरस्टैंड करना यानी समझना कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुनफरिद यानी अलग है और हर इंसान की शख्सियत या पर्सनैलिटी दूसरे इंसान से किस तरह फ़र्क है यानी क्या डिफरेंसेस है उसको पहचानना या रिकॉग्नाइज करना। द डिफरेंसेस कैन बी रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, फिजिकल एबिलिटीज़, रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स और अदर आइडियोलॉजीज़। यानी ये फ़र्क या डिफरेंसेस इंसानों के दरमियान रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स और आइडियोलॉजी, इसके अलावा दूसरे तसव्वुरात या ख़यालात का भी हो सकता है जैसे फैशन या सादगी का। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी? आंसर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। Number 1, occupation. Number 2, differences in skills and abilities. Number 3, personality traits. Number 4, values and attitudes. Each type of diversity impact on individual behavior. Question number 3, what is diversity in nursing? यानी नर्सिंग में डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स तग़य्युर पज़ीरी या बदलने की सलाहियत। आंसर, डाइवर्सिटी इन नर्सिंग मीन्स आइडेंटिफाई हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ़ अ पेशेंट्स बिकम वायलेंट टूवर्ड्स नर्सेज फॉर देयर कल्चर, जेंडर और रिलीजन। आंसर, नर्सिंग में डाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट अपनी या नर्स की कल्चर, जेंडर या मज़हब की वजह से नर्सिस के ख़िलाफ़ वायलेंट या पुरतशद्दुद हो जाए तो इसका जवाब कैसे दिया जाए। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू एडमिनिस्टर क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स। यानी डाइवर्सिटी पेशेंट को क्वालिटी केयर देने का मौका फ़राहम करता है। इट मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट पेशेंट्स कल्चर। यानी ये पेशेंट के कल्चर के बारे में मज़ीद जानने के मौके या अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर देता है या बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट? आंसर, कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आर कंट्री, वर्क प्लेसेस एंड स्कूल्स इंक्रीजिंगली कंसिस्ट ऑफ वेरियस कल्चर, रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स बिकॉज Number 1, we can learn from one another. Number 2, it gives people chance to experience different things from other culture. Number 3, it inspires creativity and drive innovation. यानी डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारी कंट्री, वर्क प्लेसेस जहाँ हम काम करते हैं, जॉब करते हैं और स्कूल्स तेज़ी से बढ़ती हुई मुख्तलिफ कल्चर, रेशियल और एथनिक ग्रुप पर मुश्तमिल है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर 1, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। नंबर 2, ये लोगों को चांस देता है कि लोग मुख्तलिफ चीज़ों का एक्सपीरियंस दूसरों के कल्चर के बारे में हासिल करें। नंबर 3, ये क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करता है यानी इनकरेज करता है और इनोवेशंस यानी नई चीज़ों यानी जिद्दत पसंदी को आगे बढ़ाता है ताकि लोग कल्चर के बारे में और भी चीज़ें सीखें। चैप्टर स्कूल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5, what is the core interventions to prevent child's death? To prevent child deaths, these are very important. Number 1, vaccination. Number 2, folic acid and vitamin A supplements. Number 3, tetanus toxoid for mother. Number 4, pre-eclampsia and eclampsia prevention. Number 5, water sanitation hygiene. Number 6, antenatal steroids in emergency condition. Question number 6, who is school health nurse? Answer, a school health nurse is a qualified, experienced professional and the only trained nurse working across health and education boundaries. They also provide link between school, home and community. Question number 6, यानी स्कूल हेल्थ नर्स कौन होती है? आंसर, स्कूल हेल्थ नर्स एक क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड यानी तजुर्बेकार, प्रोफेशनल और एक वाहिद ट्रेन नर्स होती है जो हेल्थ और एजुकेशन की बाउंड्रीज़ यानी हुदूद में काम करती है। वो स्कूल, घर और कम्युनिटी के दरमियान लिंक भी फराहम करती है यानी बच्चे की सेहत से मुतालिक ये सबको अवेयर रखती है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच। आंसर,
The child-to-child approach is an educational process that links children's learning with taking actions to promote the health, well-being and development of themselves, their families and their communities. Question number 7, child-to-child approach को define करें या बयान करें? आंसर, बच्चे से बच्चे तक की पहुँच, यानी बच्चे का बच्चों को ही सेहत से मुतालिक एजुकेट करना। हेल्थ से रिलेटेड ये एक तालीमी अमल है या एजुकेशनल प्रोसेस है जो बच्चों की एजुकेशन को जोड़ता है, क्योंकि बच्चे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे अपने ख़ानदान और अपनी बरादरी यानी कम्युनिटीज़ की हेल्थ और तरक्की को प्रमोट करने के लिए यानी फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात उठाते हैं या एक्शन लेते हैं। Children have just as much responsibilities as adults to keep themselves healthy and to help others become healthy and stay healthy. यानी बच्चों की इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी बड़ों की है कि वो ख़ुद को सेहतमंद रखें और दूसरों को सेहतमंद बनने और सेहतमंद रहने में मदद करें। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच। चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच यानी बच्चे का बच्चों की हेल्थ के लिए काम करना। आंसर, द चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच वर्क्स इन 2 मेन प्रिंसिपल गिवन एज नंबर 1, डेवलपिंग चिल्ड्रन नॉलेज ऑन हेल्थ, नंबर 2, change their attitude behavior on health to improve the level of health, nutrition and development of children through child to child activities. Child to child approach 2 important principle या असूलों पर काम करता है। नंबर 1, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना या डेवलप करना। नंबर 2, बच्चों का हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करके बेहतर से बेहतर बनाना। नंबर 3, चाइल्ड के हेल्थ लेवल को न्यूट्रिशन के ज़रिए और बच्चों के ज़रिए बच्चों के हेल्थ के एक्टिविटीज़ को प्लान और मैनेज करके बेहतर से बेहतर किया जाता है, जैसे बच्चों का स्टडी टाइम, प्लेइंग टाइम, मील टाइम और स्लीपिंग टाइम। टू मेक लर्निंग अ रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए लर्निंग को उनकी लाइफ और स्टडी से रेलेवेंट, मीनिंगफुल यानी बामायने और इंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाने के लिए बच्चों को बच्चों के ज़रिए खेल ही खेल में सिखाया जाता है। टू एनेबल चिल्ड्रन टू मेक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लाइफ ऑफ देयर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर, देयर पेरेंट्स, नेबर्स, दस अप्लाइंग फैक्ट्स लर्नड इन स्कूल इन डेली लाइफ, यानी बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों, अपने वालिदैन और पड़ोसियों की ज़िंदगी में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट यानी मियारी बेहतरी लाने के काबिल बनाना, ताकि वो अपनों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और इसी तरह स्कूल में सीखे गए हक़ाइक़ या फैक्ट्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। टू इम्प्रूव द स्कूल एंड नेबरहुड इन्वायरमेंट थ्रू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, यानी बच्चों का बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज्ड किए हुए एक्टिविटीज़ के ज़रिए स्कूल और मोहल्ले का इन्वायरमेंट यानी माहौल बेहतर बनाना। टू हेल्प द चिल्ड्रन फील अ सेंस ऑफ बीइंग कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, यानी बच्चों को अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाने या रखने का एहसास दिलाने में उनकी मदद करना कि अच्छी ज़िंदगी और सेहत के लिए कुछ चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल हेल्थ? आंसर, environmental health and protection is the art and science of protecting against environmental factors that may adversely affect human health or the ecological balance is essential to long-term human health and environmental quality. यानी environmental health क्या है? यानी environmental health और protection यानी तहफ़्फ़ुज़ आर्ट और साइंस है। यानी environmental health और protection यानी तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह बेहतर और ख़ूबसूरत बनाकर रखना है, आर्ट की तरह सजाकर, और साइंस की तरह यानी जिन चीज़ों में हम रैशनल मांगते हैं, सबूत मांगते हैं कि ये किस वजह से हम कर रहे हैं, जैसे बीमारी से या जम से दूर और हिफाजत से रहने के लिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हेल्थ पर बुरे या ख़राब असरात डालते हैं, उनमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर शामिल हैं, जैसे नंबर 1 केमिकल पोल्यूशन, नंबर 2 एयर पोल्यूशन, नंबर 3 क्लाइमेट चेंज, नंबर 4 डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, नंबर 5 लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ, नंबर 6 पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पुअर वाटर क्वालिटी, नंबर 7 टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एक्टिविटी। इकोलॉजिकल बैलेंस या इन्वायरमेंट का बैलेंस बरकरार रखने के लिए इन फैक्टर्स में रुकावट डालते हैं,
یعنی ان تمام فیکٹرز یا ان میں سے کسی بھی فیکٹر کا بڑھ جانے کی صورت میں انوائرمنٹل بیلنس برقرار نہیں رہ سکتا، اور انوائرمنٹ کا امبیلنس ہو جانا یعنی ان فیکٹرز کے بڑھ جانے کی صورت میں ہیلتھ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ کوشچن نمبر 10، نیم دا انوائرمنٹل ہیلتھ پروفیشنلز۔ آنسر: نمبر 1 انوائرمنٹل ہیلتھ آفیسرز، نمبر 2 پبلک ہیلتھ انسپیکٹرز، نمبر 3 انوائرمنٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ، نمبر 4 انوائرمنٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز۔ کوشچن نمبر 11، وچ انوائرمنٹل ایجنٹس آر پوز پرابلم آن ہیومن ہیلتھ؟ Answer: environmental agents that pose problem on living organisms are number 1 mold, number 2 radon, number 3 chemical and radiologic contamination, number 4 disaster, number 5 water, air and food, number 6 radiation studies, number 7 drinking water contamination. Occupational health. Question number 12, define occupational health nursing. Answer: occupational health nurse is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations by preventing departures from health, controlling risks and the adaptation of work to people and people to their jobs. Question number 12, occupational health nursing کو بیان کریں۔ Answer: occupational health nursing promotion یعنی فروغ اور maintenance یعنی دیکھ بھال ہے۔ اوکوپیشنل ہیلتھ نرسنگ تمام شعبوں میں جیسے انڈسٹری، ہیلتھ سروسز، کامرس میں ورکرز کی اعلیٰ ترین فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ یا سماجی فلاح بہبود کے پروموشن اور دیکھ بھال کے ذریعے ہیلتھ کی خرابی کو روکنا، ہیلتھ سے متعلق خطرات پر قابو پانا اور کام کو لوگوں کو کام کے قابل بنانا تاکہ وہ اپنی ملازمتوں کے مطابق صحیح طور پر کام کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ Question number 13, who is a occupational health nurse? Answer: occupational health nurses work in a variety of settings, mainly industry, health services, commerce and education. Question number 14, what is the role of occupational health nursing? Answer: the occupational health nurses role includes number 1 the prevention of health problems, promotion of healthy living and working conditions. Number 2, understanding the effects of work on health and health at work. Number 3, basic first aid and health screening. Number 4, workforce and workplace monitoring and health need assessment. Number 5, health promotion. Number 6, education and training. Number 7, counseling and support. Number 8, risk assessment and risk management. Number 9, counseling, health education and training program. Number 10, research related to occupational and environmental health. Chapter Review Health Transition and Global Health Demography. Question number 15, define demography. Answer: demography is the science that studies human population, especially with reference to size and density, fertility, motility, growth, age distribution, migration, vital statistics and the interactions of all these with social and economic conditions. ڈیموگرافی کو ڈیفائن کریں یا بیان کریں۔ آنسر: ڈیموگرافی وہ سائنس ہے جو انسانی آبادی کی اسٹڈی کرتی ہے یا مطالعہ کرتی ہے، خاص طور پر پاپولیشن یعنی آبادی کے سائز، ڈینسٹی یعنی کہ آبادی کتنی گنجان ہے، فرٹیلیٹی یعنی بچوں کی پیدائش، اس کے علاوہ اموات، وہاں کی گروتھ، ایج ڈسٹریبیوشن یعنی کس عمر کے لوگ کتنے زیادہ یا کم تعداد میں ہیں، مائگریشن اور امپورٹنٹ چیزوں جیسے میرج، ڈیورس، برتھ، ڈیتھ وغیرہ کی گنتی، کوانٹٹی یا اعداد و شمار، اور ان تمام چیزوں کا انٹریکشن وہاں کی سوشل اور اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے کیسی ہے دیکھنا، پتہ لگانا، اسٹڈی کرنا ڈیموگرافی میں شامل ہے۔ کوشچن نمبر 16، واٹ از ڈیموگرافک ہیلتھ؟ آنسر: it is a human populations of health which illustrate the changing structure of human population such as birth, death, income or the incidence of disease. یعنی ڈیموگرافی کیا ہے؟ آنسر: یہ انسانوں کی آبادی کی ہیلتھ ہے جو انسانی آبادی کے چینج ہوئے اسٹرکچر کو شو کرتا ہے، یہ دکھاتا ہے، جیسے پیدائش، موت، آمدنی یا بیماری کے واقعات۔ کوشچن نمبر 17، ڈیفائن ایپیڈیمیولوجی۔ آنسر: Epidemiology is the study and analysis of the distribution, patterns and determinants of health and disease condition in a defined population. The application of this study to the control of health problems.
ایپیڈیمیولوجی کو ڈیفائن کریں یا بیان کریں۔ آنسر، ایپیڈیمیولوجی کسی بھی آبادی کی اسٹڈی یا مطالعہ ہے، اس آبادی کی ہیلتھ کی، اس میں پھیلی ہوئی ڈیزیز کی، کہ وہ بیماری کس طرح آبادی میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، اور ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس اسٹڈی کو یعنی ایپیڈیمیولوجی کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 18، واٹ از ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن؟ آنسر، ان ڈیموگرافی اینڈ میڈیکل جیوگرافی۔ Epidemiological transition is a phase of development that has a sudden increase in population growth rates due to medical innovations in disease or sickness therapy and treatment. یعنی epidemiological transition کیا ہے؟ ڈیموگرافی اینڈ میڈیکل جیوگرافی کے مطابق epidemiological transition یعنی پھیلنے والی بیماریوں کی ٹرانزیشن، یعنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یا میڈیکل انوویشنز یعنی میڈیکل علاج اور میڈیکل تھیراپی کی ڈیولپمنٹ یا ترقی کی وجہ سے روکی جا سکتی ہے بیماریوں کو، جس کی وجہ سے اموات کم ہو جاتی ہیں اور آبادی کی شرح میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن از دا ریپلیسمنٹ آف انفیکشس ڈیزیزز بائی کرونک ڈیزیز اوور ٹائم ڈیو ٹو ایکسپینڈڈ پبلک ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن۔ یعنی ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن میں ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے یعنی توسیع یا ترقی کی وجہ سے وقت کے ساتھ انفیکشس ڈیزیز یعنی لگنے والی یا پھیلنے والی بیماری سے کرونک ڈیزیز میں چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزید اموات واقع نہیں ہوتی۔ کوشچن نمبر 19، واٹ آر دا ہیلتھ انڈیکیٹرز؟ آنسر، health indicators are quantifiable characteristics of a population which researchers use as a supporting evidence for describing the health of a population. Health indicators یعنی health کے اشارے کیا ہیں؟ Answer، health indicators population کی measurable خصوصیات ہیں، یعنی جسے میجر کیا جا سکے، ناپا جا سکے یا کیلکولیٹ کیا جا سکے۔ Health indicators کی ان خصوصیات یا characteristics کو ریسرچرز نے پاپولیشن کی ہیلتھ کو بیان کرنے کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر یوز کیا ہے۔ ہیلتھ انڈیکیٹر میں شامل ہیں لائف ایکسپیکٹنسی، جنرل موٹیلٹی اور انفینٹ موٹیلٹی وغیرہ۔ کوشچن نمبر 20، واٹ آر دا موسٹ کامن ہیلتھ انڈیکیٹرز؟ آنسر، نمبر 1 لائف ایکسپیکٹنسی، نمبر 2 جنرل موٹیلٹی، نمبر 3 انفینٹ موٹیلٹی، نمبر 4 میٹرنل انفینٹ اینڈ چائلڈ ہیلتھ، نمبر 5 reproductive and sexual health, number 6 nutrition, physical activity and obesity, number 7 oral health, number 8 mental health, number 9 access to health services, number 10 environmental quality۔ اس کے کچھ ریمیننگ کوشچنز آنسر ویڈیو کی تھرڈ پارٹ میں ہیں۔ اگر آپ کو کوشچن آنسر سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔